Hello you guys, I hope you all are healthy and safe. So today I have created this marriage party makeup look. I hope you all are loving it. If you want to learn this look, please keep watching my video till the end, and in this video I am also going to give you some of the important tips which everyone should know before doing their makeup. So before starting the video, don't forget to subscribe to my channel, like my video and also press the bell icon for the further notifications. So without any delay, let's jump into the video now. Okay guys, so before starting your makeup, you should always make your skin ready for it, which means आपको अपनी skin को prep करना होता है. And prep I've already told we do in 3 steps, which is cleansing, toning and moisturizing. So cleansing I have already done with my Cetaphil face wash. You can use any of your face wash. And now for toning I am using this Love Earth rose water. So let's just tone our face. For moisturizing I'm using this Cetaphil moisturizer. This is the Daily Advance Ultra Hydrating Lotion. So let's just moisturize. Now I'm using this Love Earth 24 karat face oil. This will give a glow to my skin. If you want कि आपका मेकअप जो है वो बहुत ग्लॉसी हो और शाइनी हो, लस्ट्रस हो, so you should always use these kind of face oils जो आपके फेस में नेचुरल शीन प्रोवाइड करते हैं. सो आई जस्ट लव दिस वन. ये बहुत अफोर्डेबल है. यू कैन चेक लव अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट जिधर आपको ये मिल जाएगा. कैन यू सी द शाइन? ओह माय गॉड, दिस इज लाइक डैम सेक्सी, amazing. I just love it. Now I'm using this primer. This is from Colorbar and I am going to use it in my nose corners only. बाकी फेस पे मैंने ऑयल ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, so there is no need to apply primer. You can even use primer as well, but I am not going to use it. I'm only going to use it on my nose. That's it. Yeah. To hide my dark circles, I'm gonna use this LA Girl Pro concealer and this is in the shade Fawn. So okay, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि आपको कौन से कलर का करेक्टर कंसीलर यूज़ करना चाहिए अपने अंडर आइज के लिए, so that concealer should be 2 shades, at least 2 shades darker to your skin tone, और उसकी जो अंडरटोन है वो येलो या ऑरेंज होनी चाहिए. So you can see कि इसकी अंडरटोन जो है येलो है. So this is going to help me to hide my dark circles for sure. And ये one of the best drugstore concealer है, so you can really go with this one. I just blend. Okay. इस टाइम जब आप लगाते हो कंसीलर तो आप एक टाइप के भूत लग रहे होते हो. सो नथिंग टू वरी, क्योंकि हर कोई लगता है जैसे मैं लग रही हूँ फिलहाल. So my concealer is blended and now for the foundation I'm using this Huda Beauty foundation in the shade Angel Food. I remember the shade. So जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हो उसको अच्छे से शेक कर लिया करो and then put it on your hand. ये शेड मेरी स्किन से थोड़ा ज़्यादा ही लाइट है, बट व्हेन आई अप्लाई ब्लशर और कंसीलर और मतलब सब कुछ कंटोर वगैरह जब मैं कर लेती हूँ आई मेकअप, सो तभी ये बिल्कुल परफेक्ट शेड जाता है. सो नथिंग टू वरी. अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट है, जब आप सब कुछ अप्लाई करते हो तो आपका नॉर्मल शेड हो जाता है. सो जस्ट ब्लेंड इट रियली वेल. My outfit is high neck, so I don't think कि there is any need to apply it over here. But अगर आपका outfit deep neck है, so you should make sure कि आपका foundation ऊपर एरिया में अच्छे से यूज़ होना चाहिए जो आपका cover नहीं होता. So now I'm just using my beauty blender to blend out my whole foundation. ये वाला जो foundation है, this is a little bit in dry form. So if you are a dry skin person, girl, this is not for you. और अगर आपको तब भी apply करना है, so I am going to give you a tip that is
कि जब आप अपना मेकअप स्टार्ट करें उससे पहले मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पे अच्छे से भर लें इन द सेंस कि अच्छे से लगाए, नो कंजूसी, and then you are going to slay because I just love this foundation. इसका texture, इसकी coverage is like superb, so that's why. And for highlighting, I'm using this Maybelline concealer in the shade Light. So I'm going to highlight my under eyes, cupid bow, forehead, bridge of my nose and chin. And also on my jawlines. नहीं, इसको क्या बोलेंगे? Upper jawline, yeah. For baking, I'm using my Fit Me loose powder in the shade Light. So ये जो है ये मेरा favorite loose powder है. I just love this, and I'm going to apply it on my under eyes for baking. Here also. अब मैं अपने फेस को बेक होने के लिए छोड़ रही हूँ. या इट्स बेकिंग इन अ मेकअप फॉर्म, जिसमें आप अपने लूज पाउडर को अपने अंडर आइज में और जॉ लाइन, अपर जॉ में थोड़ी देर छोड़ देते हैं, सो दैट जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाए और आपकी क्रीज ना बने आपकी अंडर आइज में और ये एरिया शार्प शो हो. So now coming to the eyeshadow part, and for this I am using this Morphe James Charles palette. So let's just do the eye makeup now. As you guys have seen that my outfit is in yellow and pink color. So yellow जो होता है वो purple का complementary होता है, and pink I guess maybe of blue or something, I don't know, but yellow is complementary of purple. So I am going to use like yellow, pink, purple and some green colors in my makeup because I am a colorful makeup person. So okay, so I am using, first of all, कौन सा ले? Okay, so first of all I'm gonna take this baby pink color as my transition shade. So let's just apply. For my crease line, I'm using the purple color. So purple से हम crease बनाएंगे अपनी. Party makeup should be a little subtle होना चाहिए. Don't go for really heavy makeup because आप bride नहीं हो. जो bride है उनको सजने दो. Now I'm gonna take the yellow color और इसको मैं purple के just above apply करूँगी. Now I'm taking pink color, this pink color for my eye corner. Or with a hint of pink, I'm gonna give a little bit of blue. This one. थोड़ा सा blue. This is looking so pretty. Okay, so now for the inner corner of my eyes, I am using this shimmer purple color. Is like super amazing color. इसके अंदर blue, purple इन सब की shine आती है. Just look at this. This is amazing. Wow, I'm a pro. I'm going to skip a liner part because बहुत ज़्यादा heavy look हो जाएगा. So it's better कि हम इसको ऐसे ही रहने दें. So now I am going to work on my face again, shading off the extra powder. For my lower lash line, I'm using this pink again. A little bit of pink. Then adding some blue. And then a little bit of shimmer in the front. Contouring, I'm using this Profusion contour palette, highlighter and contour palette, and I am using this shade which is Deep Sculpt for contour.
For blusher, I'm using this Urban Choice in color blusher, and I'm using this pink and moonshine color both. इनको हम मिक्स करके लगाएंगे. Okay, so tip for blushing is कि अगर आपका फेस हैवी है so don't apply blusher स्माइल करके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो स्माइल करके ब्लशर लगाते हैं तो वो आपके इस एरिया को हैवी करता है, तो आपका फेस और हैवी लगता है. अगर आपका फेस स्लिम है तो आप वो कर सकते हैं, बट अगर आपका फेस हैवी है मेरे फेस की तरह so you have to make a pout. Applied upward. आपको upwards direction में इसको लगाना है. So you can see the difference now. इससे आपका फेस lifted और slim लगता है. So yeah. For the highlighter, I'm using this Revolution Pro 4K highlighter, and I'm gonna use the mixture of the silver and the rose gold one. So let's just apply it. For the lips, I am using this Swiss Beauty lip palette, and the name of the palette is Swiss Beauty All About Lips in number 01, and I am going to use these two nude shades. So let's just apply it. I have added some gloss on the top of my lips, and now I'm going to wear my outfit, and then I'm gonna show you my full look, so stay tuned for the full look. And this is the final look. I hope you guys are liking it. Please tell me in the comment section below, and stay tuned for more videos. Till then, bye, take care.